Welcome student in first session from your textbook chapter number 14 natural resources. This chapter is related to biology. So everything that's around us is collectively termed as the environment. So environment acts as a life support system for us since it is from the environment that we get food to eat, water to drink, air to breathe, all other requirements of our day-to-day life. So that's why this environment acts as a life support because we get needs, okay, we get essential basic things from the environment only. Okay, now first topic is biosphere and natural resources. Means in this chapter we study about the nature and their things. Okay, so bio means that living and sphere means that around. Okay, and natural resources. So first is the biosphere. Okay, biosphere, it means region of earth crust and atmosphere occupied by the living organisms. Okay, it means region of earth crust. Earth crust, this is a superficial or topmost layer, okay, of that earth. Means earth has divided in three section. First is crust, middle one is mantle, and innermost is core. So this is the first layer. Okay, so biosphere can be divided into three physical division: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Okay, so in that lithosphere, lithos means that land. Okay, so this means land, hydro means water, that water, atmosphere means that air. Okay, so that biosphere can be divided into three physical divisions: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Clear this one? So lithosphere is the outer solid crust of earth which we call land. Okay, it upper weathered part forms the soil. Means जो सबसे क्रस्ट का जो सुपरफिशियल जो क्रस्ट का भी जो ऊपर जो पार्ट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉइल. क्लियर? And hydrosphere is the water component of the earth. Near about that 75% of the earth surface covered with the water in the form of seas, rivers, lakes, ponds, okay, and dam. So underground water is another component of the hydrosphere. And what about the atmosphere? Atmosphere is the blanket. Okay, means it works like a blanket. It works like a blanket of air that cover the whole earth. So means sphere means you know that our, okay, means surrounding, and that atmosphere means that air. So atmosphere is the blanket of air that covers the whole earth. Clear this one? So this is the three part of biosphere. Clear this one? So this three part, this is the major components and that parts division of this biosphere. So two components of biosphere now. So biotic component and abiotic component. Okay, biosphere has divided two types of component: biotic, bio means living, okay, so biotic component, abiotic means that non-living component. So living beings that constitute the biotic component of the biosphere: air, water, and soil. From the non-living or abiotic component of the biosphere. Both types of these provide resources. Okay, means ये दोनों ही क्या provide करते हैं? Resources to meet the basic needs. Means that human beings and that animals means they fulfill their basic needs. Okay, of life of forms. So both types of these provide resources to meet the basic needs of life forms. So however, the energy required for supporting these life forms is ultimately obtained from the sun. Sun's energy is used in synthesis of food for all living. Means ultimately there is a natural and main source of that energy is what? Solar energy. Means that sun energy. Clear? Now
So living beings constitute the biotic component of the biosphere, and air, water, soil from the non-living or abiotic component of the biosphere. Now types of natural resources. Okay, there is a two types of natural resources are there: exhaustible and inexhaustible. Okay, so that inexhaustible means what? They are natural resources. They are also what? Natural resources which occur in such abundance, means in large quantity, that they are not likely to get exhausted despite continuous use. means ये बहुत सारी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा abundance मीन्स लार्ज ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, एंड मीन्स कंटिन्यूस कंजप्शन यूजिंग करने के बाद भी ये एग्जॉस्ट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी. नाउ नेक्स्ट, exhaustible natural resources. Okay, they are natural resource which are available in limited quantity. Okay, this is the opposite of that inexhaustible. That present in abundance quantity, but in this exhaustible natural resources available in limited quantity, they may to get depleted by continuous consumption. Okay, मीन्स जब आप इनका कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, कंजप्शन करते हो, तो ये क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्ट हो जाते हैं. क्लियर दिस वन? सो exhaustible resources, okay, are of two kinds: renewable and non-renewable. From name only we can understand renewable means आप उसको फिर से जनरेट, फिर से रीगेन कर सकते हो, and that non-renewable means we can't renew. Okay, so like that means take thousands and millions of the years simply. So first is renewable resources. They are exhaustible resources which get replenished regularly. means ये उस टाइप के resources होते हैं जो continuously means use भी होते हैं और replenish भी होते जाते हैं regularly. These include both living and non-living resources which can replenish themselves by quick that recycling. Okay, means ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, एंड विच कैन रिप्लेनिश देमसेल्स अपने आप, मीन्स सेल्फ. ओके, क्विक रिसाइकलिंग से ये मीन्स रिन्यूएबल और मीन्स जनरेट होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर. सो रिन्यूएबल सोर्सेज कैन लास्ट फॉर एवर इफ दे आर यूज्ड दैट रिस्पॉन्सिबली. मीन्स अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो तो दे कैन लास्ट फॉर एवर. नाउ सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. ओके, मीन्स अगर आप उसको यूज कर लेते हो एक बार और वो अगर खत्म हो जाते हो तो फिर से वो रिप्लेनिश नहीं होते. दस दीज रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग एंड कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स बाय रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट. और फिर ये खुद से मीन्स सेल्फ ये रिप्लेनिश नहीं होते हो ना. ओके, बाय रिसाइकलिंग एंड दैट रिप्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स सच इज कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, सो मीन्स दैट इफ नॉट यूज केयरफुली दे विल अल्टीमेटली गेट एग्जॉस्टेड. अगर आप इसे मीन्स अच्छे से यूज अगर नहीं करते हो केयरफुली तो they will ultimately get exhausted and their increased consumption result in quicker exhaustions. Clear this one? So that's why we should to use carefully these minerals, fossil fuels, coals and petroleum. Clear this one? So renewable and non-renewable. What is the difference between this? So renewable means these resources, okay, are replenished within reasonable time. Means ये अंडर टाइम पीरियड रिन्यू हो जाते हैं. कौन से? रिन्यूएबल. एंड दैट नॉन रिन्यूएबल रिप्लेनिश इज नॉट पॉसिबल. इनका रिप्लेनिशमेंट इनका पॉसिबल नहीं है. इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर एवर प्रोवाइडेड दे आर यूज इन लिमिटेड अमाउंट. मीन्स ये फॉर एवर प्रोवाइड होते हैं और इन लिमिटेड अमाउंट्स में रहते हैं. ओके, यूज अगर आप उसका मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसको आप अच्छे से यूज करते हो तो ये लिमिटेड अमाउंट्स में रहते हो और फॉर एवर रहते. सो सेकेंड, इन दिस नॉन रिन्यूएबल दीज रिसोर्सेज वे अल्टीमेटली लीजन्स एंड गेट एग्जॉस्टेड. मीन्स इनमें कमी आ जाती है और फिर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं.
थर्ड, इन रिन्यूएबल सोर्सेस दे आर बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक, ये बायोटिक भी होते हैं और अबायोटिक भी होते हैं. बट इन नॉन रिन्यूएबल दे आर अबायोटिक. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट मिनरल, फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर द एग्जाम्पल. In that renewable resources availability can be increased only by enhancing replacement. Okay, अगर इनका increased करना है इनकी quantity availability, so by enhancing replenishment means इनका replenishment themselves quickly अगर होते रहता है. जैसे आपने फॉरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रीज. ओके, तो ट्रीज को आपने अगर कट कर दिया और फिर से उसको न्यू एक जनरेट न्यू ट्रीज, उसको कट करने के पहले एक ट्रीज का प्लांटिंग कर दो, तो ये क्या हो गया, रीजनरेट हो गया. ओके, मीन्स इनकी जो लाइफ है, अगर आप उसको रिप्लेनिश करते रहोगे, ओके, मीन्स उसको कट करने के पहले उसको आप दूसरा एक ट्री लगा दो. ओके, अंडरग्राउंड वाटर है उसके भी मीन्स इसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू फिर से रिचार्ज भी करते रह सकते हो. ओके, लाइक दैट. So we have to recharge time to time this underground water level by rainwater harvesting. Okay, and wildlife also we can preserve that, means that for protection them. And soil also means we have to avoid the soil erosion by planting more and more trees, like that. So availability can be increased only by enhancing replacement. Clear this one? Forest, wildlife, underground water, these are the example of that renewable resources. And that non renewable resources, they are means that increase exploitation means ऐसा उसको यूज करोगे will result in quick exhaustion. means अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो वो क्विक क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट वन इज एयर. ओके, so first air. Okay, this is the inexhaustible resources. The multi-layered gaseous envelope surrounding the planet Earth is called atmosphere. Means that our native planet Earth, so that air envelope means look at this picture. Suppose this is Earth. Okay, और वैसे ये इसमें सब atmosphere means air just envelope. Okay, so the multi-layer gaseous envelope surrounding the planet Earth is called atmosphere. Atmosphere filters sunlight. Okay, atmosphere क्या कहता है, filter the sunlight reaching the earth. means ये sunlight को filter करके अर्थ तक पहुंचाता है. affect the climate and is a reservoir of several elements, okay, which are essential for the life. It is divided into 5 distinct layer or zones. So first is troposphere, second is stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere, and last one is exosphere. Look at this picture. Okay, this is earth. So first layer is troposphere, second is stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere, and last one is exosphere. So troposphere is the lowest region of atmosphere which contains air and is subject to different the differential heatings. Okay, it extends from the surface up to 8 kilometer to 20. means ये अर्थ के सरफेस से 8 से 20 किलोमीटर की रेंज पे ये ट्रोपोस्फियर लेयर रहती है. लुक एट दिस 20 मीन्स दैट किलोमीटर. ओके, दिस इज द हाइट, इज शोइंग द हाइट. ओके, so many important climate events such as cloud formations, lightning, thundering events such as storm formation, etc. all takes place in this troposphere. Next, that about the natural resources. So first we take the air. Okay, on earth we human beings along with all other biota are surrounded with air. Air is a mixture of gases such as nitrogen 78%, oxygen 21%, and carbon dioxide 0.03%. It also contains water vapor and suspended dust particles also. So that oxygen is required by all living beings for respiration and for combustion. Combustion means help in that burning of that material. So importance of atmosphere. Air
inexhaustible natural resources. We know very well. In a world without air, there would be no plant or animal life, no winds, clouds or rain, no fires, and no protections against harmful solar radiation. So this is because the atmosphere covers the earth like a blanket. Clear? So what are the importance of that atmosphere? It helps in climatic control. Okay, so it controls the climatic, it helps in keeping the temperature steady at the night and during the day, मीन्स डे और नाइट में भी टेम्परेचर को कंट्रोल करके और मेंटेन करके रखता है. ओके, एंड थर्ड, इट कॉजेस विंड्स टू ब्लो, दैट इज इट्स लैंड ब्रीज and sea breeze. Okay, so look at this, land breeze and sea means it causes winds to blow, that is land breeze and sea breeze. Okay, and fourth, it causes the rain also. So what are the that land breeze and that sea breeze? So movement of wind from sea to land, from sea to land, okay, during the daytime, and from land to sea, from land to sea during night time. So air movement in coastal areas, during daytime there is a regular flow of cool air. Means ये क्या होती है? Look at this arrow. This arrow is indicating this from sea water to land. So this cool air from the sea towards the land, okay, means regularly flow there. At the night time there is a reverse flow. Okay, look at this, this is the forward and this is the reverse flow. Okay, at the night time that is a reverse flow of air from land to sea. So this happen because during the daytime land gets heated faster. Okay, remember that during the daytime lands get heated faster than water. So radiation of heat from land hits the air above it. So the hot air rises and creates an area of low pressures. आपको पता है hot air कैसी होती है? It is a light, so it is rises up. Okay, that the hot air rises and creates an area of low pressure. Sea water does not get heated so rapidly. तो ये sea water means rapidly heated नहीं होता है. So air above the sea is relatively cool. क्योंकि एज कम्पेयर टू लैंड मीन्स ये क्या होती है, सी के ऊपर की जो एयर है वो कैसी रहती है? कूल रहती है. सो दैट्स वाई दैट अबोव द सी इज रिलेटिवली एयर दैट कूल. अ हाई प्रेशर एरियाज फ्रॉम अबोव द सी वाटर इज कम्पेयर टू एयर ओवर द लैंड. सो देयरफॉर कूलर एयर ओवर द सी flow towards the land where low pressure areas exist. Movement of air from the one region to the other creates winds. Now during the night time, during that the night reverse flow of air occurs. Okay, this is the reverse flow of air. So land cools down rapidly, lands cool down rapidly एंड एयर अबोव द लैंड्स बिकम्स कूलर. अब जो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो कैसी होती है? कूलर होती है. ओके, एंड सी वाटर कूल्स डाउन स्लोली, सी वाटर कूल्स डाउन स्लोली. सो द एयर अबोव द सी इज हॉटर, क्योंकि मीन्स स्लोली कूल हो रही है. तो जो सी के ऊपर की जो एयर है वो कैसी रहती है? वार्म एयर है. लुक एट दिस, वार्म एयर. ओके, जैसे यहाँ पे लैंड के ऊपर की एयर कैसी थी? ड्यूरिंग डे टाइम पे वार्म थी, और सी की ऊपर की लेयर कैसी थी? कूल. तो जस्ट अपोजिट होता है. ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैंड के जो एबो एयर है वो कूल रहती है, और सी के जो एबो एयर है वो कैसी रहती है? वार्म एयर. सो द एबो द सी इज हॉटर and has a lower air pressure as compared to air pressure above the land. So therefore cooler air present over the land flow towards the sea. Clear this one? So this is the movement of wind from sea to land during the daytime and from land to sea during the night time. Clear this one? Now factor influence movement of air. So depending upon the energy level and air pressures, diverse type of atmospheric phenomenon occurs, such as breeze, means cold wind, okay,
wind storm, thunderstorm, monsoon rains, cyclones, okay, etc. So various factors controlling natural phenomena. So these phenomenon are of earth. This is the first. uneven heating can different parts of the को affect करता है. Second, differences in heating and cooling of land and water bodies. अभी आपने एबो एग्जांपल देखा कि जो वाटर बॉडीज है और लैंड है तो दोनों की मीन्स कूलिंग और हीटिंग मीन्स में क्या रहता है, टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है. ओके. थर्ड, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन. वेपराइजेशन मीन्स दैट वाटर गेट इवेपरेट. Okay, and condensation is water vapor convert into water. So vaporization and condensation of water vapor. Okay, so this is also depend on that factor. And fourth, rotation of earth. Okay, so you know very well there is a earth has two types of rotation, means that first is rotation means there is on their own axis. Okay, earth rotate on their own axis, मतलब अपनी ही जगह पे घूमती है. And second one is revolution, okay, around the sun. So that is also affect. And fifth, presence of high mountain ranges in the path of the winds. And sixth, difference in that topography over which the wind passes. Means these are the factors. Okay, means अर्थ जैसे रोटेट होगी तो उससे भी मीन्स हीट और कूलिंग ये भी अफेक्ट होता है. मीन्स ये सब क्या है, अफेक्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंस मूवमेंट ऑफ द एयर. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द एयर. Clear this? Now next one is air pollution. The contamination of air. Okay, contamination means that impure. So the contamination of air with unwanted and undesired substances is called the air pollution. Means those substance we don't want in the air. Okay, जो air में present नहीं होना चाहिए तो उसे कहते हैं undesirable substance or unwanted substance. So air pollution is the addition of air pollutants such as that particulated matter, gases and vapors into the atmosphere has an adverse effect on humans, animals, vegetation and human assets. So in fact that air pollution is of two types. Natural means that forest, fire, dust, storm and pollen. And second one is by that human made. ओके, सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है. व्हीकल्स, इसका भी जो स्मोक क्रिएट होता है. थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट जो रहते हैं जिससे इसमें पावर जनरेशन होता है वहाँ पे भी होता है. ठीक है, गैसियस. सो एमिशन ऑफ गैसेस. ओके, सो एमिशन फ्रॉम दैट इंडस्ट्रीज मीन्स बहुत सारी जो गैसेस निकलती है, एमिट होती है फ्रॉम इंडस्ट्रीज. माइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोन्स, क्रशिंग मीन्स जो स्टोन उसको क्रशिंग करने के लिए भी आपने देखा होंगे बहुत सारी स्मोक और धूल जो रहता है वो क्रिएट होती है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो जो स्टोन क्रशिंग होगा तो माइन्यूट पार्टिकल दे ऑल्सो मीन्स फ्लो फ्रॉम द फ्लो विद द एयर. सो एयर विल गेट polluted. Okay, these are the two resources, two main types of air pollution, natural and that human made. Clear this one? Now particulated pollutants like SPM. SPM is what? That SPM is smoke shoot up, etc. So suspended, SPM is suspended particulate matter because they remain suspended in air for a good period of time. Okay, means ये बहुत लंबे समय तक भी रह सकते. And that for example that fly ash and dust gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide. So these are the that pollutants. Pollutant means what? Those pollute the air, means those are responsible for polluting or for pollution, that is called the pollutant. Clear this one? So that प्रोड्यूस्ड व्हेन मीन्स जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सब्सटेंस बर्निंग और जो ऐसे सब्सटेंस रहते उससे, जैसे फॉर एग्जांपल कोल, वुड इज बर्न. जब ये बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी अनबर्न पार्टिकल से क्रिएट होती है. ओके,
So gases that causes air pollution are sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, hydrogen that cyanides, hydrogen fluorides, chlorine, methane and ammonia. They are formed from the nitrogen, sulfur and carbon compounds of fossil fuel. Means जब fossil fuel burn होते हैं तो ये सब gases create होती and decaying organic matter. So pollutants vapors include unburned hydrocarbon. Pollutant vapors जो रहती है it include unburned means वो जला हुआ नहीं, तो पूरी तरीके से नहीं जलता है, तो that is what unburned hydrocarbon means those compound which is made by hydrogen and that carbon. Clear this one? So that is called the hydrogen, that hydrocarbon. Now some common sources of air pollution, so because of that air get polluted. For example heavy metals, industries से बहुत सारी smoke create होता है, okay, and that solid, liquid और gas तीनों form में उसमें से waste generate होता है. That waste get mixed into that air and that air get become polluted. Radioactive elements, biocides, pesticides, okay, हार्मफुल जो बायोसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं उससे भी दैट एयर गेट पॉल्यूटेड. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट उससे भी बहुत सारे स्मोक क्रिएट है. आयोनाइजिंग दैट रेडिएशंस, स्मोक्स एंड दैट फोटोकेमिकल स्मोक. सो दीज आर द sources of air pollution. Clear this one? Now that effect of air pollution on human beings, that effect of air pollution on human beings. SPM means the suspended particulate that matter causes the asthma, bronchitis, allergy, cold, asthma, and that bronchitis. These are that bronchitis is related to the lungs problem. Allergy, cold means हमेशा मीन्स सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड जैसा बना हुआ रहता है. सो एलर्जिक मीन्स सिंपली जैसे धूल, मिट्टी और अनवांटेड स्मेल, सो इससे मीन्स एलर्जी उनको बनी हुई रहती है. सेकेंड, पॉल्यूटेंट गैसेस कॉजेस इरिटेशन इन आईज, थ्रोट एंड लंग्स. मीन्स पॉल्यूशन जैसे अभी क्रैकर्स जब बर्न किए जाते हैं तो कितने सारे मीन्स स्मोक क्रिएट होता है. सो उसके वजह से आईज में प्रॉब्लम होती है, थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है. दे इंज्योर द लंग्स, किडनी, स्प्लीन, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस. Okay, so that spleen and nervous system also. So heart related diseases tend to increase. Means जो heart से related patient रहते हैं तो ये pollutant gas से वो increase होते जाता है. Okay, and that many people develop terminal elements such as cancer also. So that's why this air, because you know very well that air is a life giving gas, because वी ब्रीथ इन एयर, फ्रेश एयर. ओके, और अगर अपनी बॉडी के लिए कैसी एयर चाहिए आपको? फ्रेश एयर चाहिए. और जैसे आपने देखा होगा कभी अपने को सफोकेशन फील होता है, सो वी वांट टू टेक फ्रेश एयर, सो वी गो टू आउटसाइड, मीन दैट इन गार्डन एंड ग्राउंड लाइक दैट टू टेक द फ्रेश एयर. सो दैट्स वाई मीन्स एयर अगर पोल्यूटेड हो जाती है सो इट बिकम डेंजरस टू अस. क्लियर? Third, hydrocarbons vapors causes the cancer. Hydrocarbon vapor, I already told that compound of that hydrogen and carbon mixed together and form the compound that is called the hydrocarbon. And that hydrocarbon vapors not only damage the internal organ but also cause the cancer. Clear? Falling of leaves, reduce growth, degeneration of chlorophyll, etc. It leads to acid rain. And it causes the global warming, it causes the depletion of ozone layer. Okay, that we will study in the next video about the ozone layer. So these are the effect of air pollution. Thank you. So air pollution is also result in two serious by ecological problems of global magnitude, greenhouse effect and peeling of ozone umbrella. Peeling means that जैसे कैसे रहता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है पल्प की, तो उसको अपन पील करते. सो लाइक दैट ओजोन लेयर, इट इज वर्क्स लाइक ए अम्ब्रेला और प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, सो दैट पील आउट बिकॉज ऑफ दैट एयर पोल्यूशन. सो that the carbon dioxide of the atmosphere keeps the earth warm. You know about that. Okay, so earth warm, and much like a glass wall that keeps a greenhouse warm.
सो मीन्स इसेंशियल जो एक टेम्परेचर चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू मीन्स मेंटेन होता है. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमोसफियर कीप्स द अर्थ वार्म. मीन्स अर्थ को कैसे रखती है, वार्म रखती. और मच लाइक ए ग्लास वॉल दैट कीप्स अ ग्रीन हाउस वार्म. सो मीन्स एक वॉल जैसे क्रिएट हो जाती है और हाउस को कैसा रखती है, मीन्स दैट वार्म रखती है. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस वार्म. And this effect is called the greenhouse effect, means trap the carbon dioxide. Okay, so that we will study in the next video, means what is the role of that greenhouse effect in detail. So the increase in carbon dioxide in the atmosphere intensify the greenhouse effect and leads to the global warming. पहले greenhouse effect होता है, that is good for that earth. बट अगर ज़्यादा मीन्स टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज होते ही जाएगा, सो इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज एन इंक्रीजेस इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.